Friends, today in this episode we will be discussing on chapter number 5 of DRA examination. It relates to provisions of Negotiable Instrument Act for payment and collection of checks. बंधुगण आमे आजिर एई एपिसोड रे पंचम अध्याय डीआरए रो पंचम अध्याय जोटा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो विभिन्न दिग विशेष करी चेक ड्राफ्ट एगुड़ाक पेमेंट केमती हम से संबंधी विषय रे आमे आलोचना करिबा. First, we must understand what is a check. Check is drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. अर्थ चेक एमिति गोटे इंस्ट्रूमेंट जोटा कि गोटे पर्टिकुलर गोटे विशेष बैंक उपरे ड्रा होता है जहाँ कि डिमांड कले ही दाबी कले ही बैंक पेमेंट करी. Check is defined under Section 6 of Negotiable Instruments Act. Negotiable Instruments Act is it is called Negotiable Instruments Act 1881. 1881. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने बुझामणाकारी उपकरण ओडिया रे किंतु निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने समस्ते सब भाषा रे बुझी. चेकटा यही जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अच्छी तार सेक्शन 6 रे तार व्याख्या करा है. There are 4 characters of a check. चेक चारिटी विशेषता अछि और 4 features. First is it should be in writing. प्रथम करी ताहा लिखित भाव हेबा दरकार. Writing should be in English or any local language. इंग्लिश रे हेई परिबो बा कोनसी भारतीय भाषा रे हेई परिबो. आमे भारत संदर्भ रे कथा होचे. पेन रे लिखा हबो, पेंसिल रे लिखा हबो. It should be written in pen, not in pencil, because pencil can be erased. Pencil writing can be erased. Then date. Date must be, it should not be a post-dated check cannot be presented at the counter, and a stale check also cannot be presented at the counter. Post-dated माने आजी ठारू आगुरु आगु किछि दिन भविष्यत तारीखटाକୁ पोस्ट डेटेड बोली कहा जाए. सो भविष्यत तारीख लिखाइथवा चेक बा जोड़ा 3 एक्सपायर हे गलान 3 मास गोटे चेक रो वैलिडिटी होची 3 मास पूर्वर डेट हे येथिले सेटा पेमेंट हेबा नाही. इंग्लिश कैलेंडर अनुसार डेट बा शक संबंध अनुसार डेट भी acceptable. Date as per English calendar as well as Shaka Sambat is also acceptable. Third condition is that amount should be written correctly both in words and figures. तृतीय कथा है टंका लिखाई दरकार रकम जोटा कि अंक और अक्षर रे ठीक लिखाई दरकार. चतुर्थ एंड फोर्थ थिंग इज सिग्नेचर बा दस्तखत.
signature should be as per the specimen signature given to the bank. दस्तखत बैंक रे जो नमूना दस्तखत दिखाई ता सहित खाप खाइबा से ठीक से भाई सिग्नेचर दस्तखत होइथिबा दरकार। आमे वर्तमान डिस्कशन करिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। वी विल डिस्कस नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग बा विभिन्न प्रकार क्रॉसिंग विषय रे आलोचना करिबा। मुख्यतः क्रॉसिंग होची दुई प्रकार। क्रॉसिंग माने चेक रो ऊपर दुईटी गार दे जा लिखाई थाए सेटा क्रॉसिंग कहते। जनरल क्रॉसिंग बा साधारण क्रॉसिंग टा चेक रो ऊपरी भाग रे बाँ कड़े दुईटी पैरेलल लाइन समांतराल रेखा मध्य रे रेखा है खाली रेखा बा से मध्य रे एंड को बा अकाउंट पे लिखा है को जनरल क्रॉसिंग कहा जाए। जनरल क्रॉसिंग इज putting two parallel lines on the left hand top corner of the check and either only two parallel lines or writing end ko account pay. Such things is called are the examples of general crossing. What is special crossing? विशेष क्रॉसिंग कौन? विशेष क्रॉसिंग or special crossing is within two parallel lines or without parallel lines. When a bank's name is written on the face of the check, it is called special crossing. दुईटी समांतराल रेखा मध्य रे बा बिना समांतराल रेखा रे चेक रो सामना भाग रे जिते बेले गोटे बैंक रो ना बा सील लिखाई थाए सेटा कहते स्पेशल क्रॉसिंग। What is the effect of account pay crossing? Answer is, as per RBI directives, a check which is crossed as account pay has to be credited to the pay's account only. Account pay crossing रो विशेषत्व कौन? account pay रो विशेषत्व हला भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश अनुजाई अकाउंट पे क्रॉसिंग रो जहाँ राशि सेटा ग्राहकों बैंक अकाउंट रे ही जमा हो। स्पेशल क्रॉसिंग रो व्हाट इज द बेनिफिट और स्पेशलिटी ऑफ ए स्पेशल क्रॉसिंग? स्पेशल क्रॉसिंग मीन्स drawee bank shall not pay the check or draft otherwise than to the banker to whom it is crossed or his agent. His agent means agent for collection. Means special cross check should be credited or should be paid to that bank's account who has specially crossed the check. स्पेशल क्रॉसिंग रो विशेषत्व हला जे ड्रॉई बैंक से बैंक को ही पेमेंट करिबो जे सेटा को स्पेशली क्रॉस करिछि। अर्थात स्पेशली क्रॉस जे करिछि से बैंक तांकर ग्राहकों को खाता को चेक रो प्रोसेस जमा करी। बर्तमान आम बुझा चेक रे जो पार्टी से माने किए चेक रे तीन जन पार्टी जने हला ड्रॉयर जने हला ड्रॉई और जने हला पेई। ड्रॉयर किए? ड्रॉयर होचंदी जे चेक टा दस्तखत करचंदी बा
ग्राहक निजे ड्रॉई किए ड्रॉई होची जो बैंक पेमेंट करिवो जो बैंक रो चेक सेटा सी हला ड्रॉई बैंक सी बैंक पे जा नारे चेक लिखा है सी हले पे so who is a drawer how many parties are there are mainly 3 parties in a check first party is there are 3 parties drawer drawee and pay drawer माने जी चेक लिखुचंती बा जहाँ खाता धारक ड्रॉई होची बैंक जो बैंक रो चेक सीटा जे जो बैंक रे खाता अछि ग्राहकंकर पे हला जे पैसा पाइबे in English I am repeating drawer is the person who issues the check that means the customer drawee is the bank who has where the customer is having the account pay is the person in whose name the check is written that the recipient of the check but as regards drafts the drawer is changed in drafts also there are 3 parties barring the let us understand first party the first is drawer is the issuing bank drawee is the paying bank pay is the person in whose name the draft is issued and the person who has applied for the draft is the purchaser of the draft कारबार रे ड्रॉयर होचंती जो बैंक इश्यू कले ड्रॉई होचंती से बैंक जो पेमेंट करिवो पे जाना रे ड्राफ्ट लिखा है प्लीज रिमेंबर this type of question may also come मन रखंतु ए प्रकार प्रश्न भी आसी पारे since 2010 CTS system is implemented for collection of the checks and drafts etc. CTS full form is check truncation system 2010 मसीहा ठारू चेक ट्रंकेशन सिस्टम माध्यमरे बा सीटीएस माध्यमरे चेक बा ड्राफ्ट रो से परि उपकरण मानकर कलेक्शन संग्रह होई पाछ ट्रंकेशन मीन्स ट्रंकेशन रो ओडिया अर्थ होची छेदन ता काम एटा को शॉर्टकट करिया समय टा कम कर दिया what is the benefits of check truncation benefits of check truncation are speed previously much time was being taken for collection now very speed within 3 days today check is deposited by after within 2 days the amount is getting credited to the customer's account. Reduce scope of frauds. There is hardly any scope for frauds. It minimizes the cost of collection. Cost of collection also becomes very cheap. It reduces reconciliation issues. It eliminates logistic problem. Hence, all these benefits give customer satisfaction. Check truncation system रो फायदा कौन सुविधा कौन यह शीघ्र चेक रो प्रोसेस कलेक्शन करे ठकामी बा जालियाती हेबार संभावना बहुत कमी जाई थाए कलेक्शन बा संग्रह संबंधी खर्च बहुत कमी जाए चेक पठेबा आनिबा ए सबुर जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम सेटा भी रहेनी
गोटे बैंक रु आ गोटे बैंक गोटे शाखा रु आ गोटे शाखा मध्य जो रिकनसिलिएशन प्रोब्लेम थाए सेटा भी कमी जाए। ये सब द्वारा ग्राहकंकर सैटिस्फैक्शन बा खुशी आनंद बढ़ी जाता। If a bank, if the instrument is returned by the paying bank or the drawee bank, then the drawer bank has to return the check within 24 hours to the customer. जदि ड्रॉई बैंक चेक टाको पेमेंट करे नहीं तेरे ड्रॉयर बैंक माने जो बैंक कलेक्टिंग बैंक ड्रॉयर बैंक नो कलेक्टिंग बैंक जो बैंक कलेक्ट करुची ताकू से 24 घंटा मध्य रिटर्न हेबार 24 घंटा मध्य ग्राहक को फेरिया पड़ो। ये भी गोटे प्रश्न हो पारे। इफ द ड्रॉई बैंक रिटर्न्स द चेक द कलेक्टिंग बैंक हैज टू return the check to its customer within 24 hours of return by the drawee bank. There are three important sections of Negotiable Instrument Act which you must know. Section 31. Section 31 says that if sufficient balance is there in the account and the signature is okay, then banker is bound to pay the checks drawn by its customer. Section 31 Negotiable Instrument Act 1881 सेक्शन 31 कहूँ जे जदि ग्राहकंकर खातार टंका अच्छी आ सिग्नेचर दस्तखत तांकर ठीक अच्छी ताहले बैंक से चेक को ऑनर करिया पई बाध्य। Section 131 says it provides the protection to collecting banker. Section 131 of Negotiable Instruments Act 1881 gives protection to the collecting banker on fulfillment of three conditions. First condition is that the check must be crossed. Second condition is that the check must be collected. The check should be collected for its customer. And third condition is that the collecting bank acts in good faith and without negligence. Negotiable Instrument Act 1881 सेक्शन 131 कलेक्टिंग बैंक को संग्रहकारी बैंक को प्रोटेक्शन दे थाए सुरक्षा दे थाए को कंडीशन रे को परिस्थिति रे प्रथम कंडीशन है जे अकाउंट चेकटा अकाउंट पे क्रॉस्ड होइथिबो। द्वितीयत कलेक्टिंग बैंक निजर ग्राहकों पे चेकटा कलेक्शन करथिबो। तृतीय कंडीशन है कलेक्टिंग बैंक विश्वास करिगिरी आउ कौनसी भूल भटका न थाइगिरी कलेक्शन करथिबो कौन प्रकार निजर नेग्लिजेंस नथिबो तेबे तांको प्रोटेक्शन मिलिबो सेक्शन 131 अनुसार। सेक्शन 138 of Negotiable Instrument Act says that it is an offence if a check is returned unpaid due to insufficient funds or exceeds arrangement. सेक्शन 138 ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 138 कहे जे जदि कौन ग्राहक खातार टंका नहीं आ चेक इश्यू करिबा जदि से बैंक से चेक को कम टंका अच्छी बोली बा पूरा टंका नहीं बोली फेरे दिए बा बैंक सहित जो अरेंजमेंट थाए ताठू बढ़ीगला क्षेत्र में से फेरे दिए तेबे ताहा एक अपराध बोली मानि जाइबो एवं जी चेक इश्यू करचंती तांको जरिमाना बा
दोषी साब्यस्त करा जाय परिबो। तो ये सबू है आपणकर से चैप्टर नंबर 5 संबंधी प्रश्नावली। मु आउ थे अनुरोध करी समस्त को पूरा विशद भाव चैप्टर अध्यायटा को पढ़ंतु आउ अन्य प्रकार प्रश्न आसिले जदि आसो ताको सेति प्रस्तुत होंतु। अगेन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please go through the entire content of chapter number 5 and be prepared for any type of question which may come. Thank you.